Hello, hello, hello. Hello. What happened? Why you are not giving the answer? Okay, let us. We are going to start the differentiation concept that is called derivatives. Okay, today we are going Okay. to see how the formulas and if possible today only we can do the problem. The name of this topic is differentiation and simple words we can call them it as derivatives. So now here we are going to see some formulas first of all. These formulas again don't take easy. Okay, very important formulas I am writing. See, differentiation means this one, d by dx. Differentiation means d by dx. D by dx of any constant term if you want to find out, that is becomes zero. Constant term in the sense, we want to find the derivative of 5, 4, 3, minus 1. Any term which are not with x, then we can say that it is a constant and the derivative of constant is 0. Similarly, derivative of x with respect to x is becomes 1. Derivative of that means d by dx of e to the power of x is equal to e power x exponential function. D by dx of root x is equal to 1 by 2 root x. Now d by dx of log x, log x not over log x is equal to 1 by x. Next d by dx of 1 by x is equal to minus 1 by x square. Then next, so many formulas are there. There are some list of formulas I am giving you, which is really helping you to understand this topic. Then after that d by dx of a to the power of x. Any constant whose power is x, that can be written as a power x into log a. Then we have trigonometric function derivative also. So write in different color, d by dx of sin x. Sin x derivative is equal to cos x. Is this a topic completed in your college? It's going Yes, on. sir. Completed. Yes. Cos x means it is minus sin x. And do you have any idea about it? No, sir. You are there.
You are there when it is going on. Check square of x. Trigonometric means six ratios are there. You know the trigonometry. Just now we have finished. Sine, cos, tan, Yes. cosecant, cosecant x. Derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x. Then d by dx of sec x. Sec x means it is sec x into tan x. Secant is the full form. Sec x into tan x. Then last one d by dx of we have cot x of cot x minus cosecant square of x. This is about trigonometric. Then inverse trigonometric also. D by dx of sine inverse of x is equals to 1 by under root 1 minus x square. D by dx of cos inverse of x is equals to minus 1 by under root 1 minus x square. D by dx of tan inverse of x is equals to 1 by 1 plus x square. D by dx of cot inverse of x is equals to minus 1 by 1 plus x square. Two more are there, that is d by dx of sec inverse of x and cosecant inverse of x. That is not using, that's what I am not writing. जो अपने को जरूरत है, whatever it is required, that we have to Yes. write it. D by dx of sine hx hyperbolic function is equal to cos hx, and d by dx of cos hx is equal to sine. There is no minus concept here in this hyperbolic function. And there are some rules also we have. Okay, what are the rules? Rules. If you have two functions and both we have to differentiate, then we have to apply this rule number one, product rule. It is called product rule. Product rule. It means two functions. If you want to differentiate like that, u and v. Any two functions we take any sin x and cos x. If you want to find out the product derivative, then the formula is u d by dx of v plus v d by dx of u. First function derivative of second function plus second function derivative of first. Then quotient rule. Quotient rule. When we have two terms like this form, d by dx of u by v form, then it can be written as, first we write the denominator, that is v square. Then v will come here. D by dx of u is here minus u into d by dx of v is here. This is third rule is also there.
d by dx of UVW. Three term multiplication. Then what's the rule? You have to keep it UV as it is. Then the derivative of the third term plus keep two of them as it is. UW as it is. D by dx of VW as it is. D by dx of V plus and V as it is here and W also as d by dx of U. Every time two terms we have to keep outside and one term we have to differentiate. This is the rule. Okay. This is the formula. Now immediately we have to start the problem. Some questions we are going to do it today only, and how Okay. these rules are applicable in this problem you can see. So now we see how the questions will come. Like example, if I want to find out, suppose y is equals to, we have problems we are starting. Y is equal to, suppose you have 2x plus 3. For this term we have to find out the derivative. तो कैसा करेंगे? We have to apply, यहाँ पे लिखेंगे differentiate both sides with respect to WRT with respect to x. It means that we are going to apply derivative d by dx for each and every term. D by dx of y is equal to d by dx of this term 2x plus 3. This means that this d by dx will go to this term and this d by dx will go to this term. And now you see how it is. D by dx of 2 into x plus d by dx of what? 3 only. No? I forget to write one more rule here. So let me write it. If you have number 4, d by dx of some k value with any function of x, then we have to keep this k outside and then we have to find out d by dx of that function. Same rule will be applicable for this question. You can see 2 is a constant now. This 2 we can Yes. pull out d by dx of x plus d by dx of 3, d by dx of 3. This is 2 into, this answer is 1. Now you see the formula. Here you can see d by dx of x is 1. If numerator and denominator value will become same, it is 1. And d by dx of 3. 3 is a constant, no x. So we say that it is 0. So 2 1 are 2 plus 0 is 2. So the answer of this problem is 2. Correct? Yes. Okay. Number 2. Question number 2. Exponential formula पर नहीं लिखे. You have forget this formula. It's important. D by dx of x to the power of n is equal to n x power n minus 1. Now look at, suppose you have y is equal to, अच्छा चलिए y is equal to भी नहीं है, क्वेश्चन खाली ऐसा है क्वेश्चन. Find the derivative of, find the derivative of 3x cube plus 5x square plus
plus 3. Like this example we can see, right? So solution, when we are going to have a solution of these type of questions, you can see the solution. Our step number one is let y is equal to 3x to the power of 3 plus 5x square plus 6x plus 3. Correct? Now we have to Yes. differentiate this with respect to x. So mention that differentiate both sides with respect to x. So let us apply d by dx for each and every term. D by dx of y is equal to, now you see 3 is a constant now. Like here you see 2 is a constant, we have written outside. Immediately 3 also a constant, pulled it out. Directly 3 को बाहर ही लिख देंगे. D by dx of x cube plus again 5 is a constant, take it out. D by dx of x square plus 6 is a constant, take it out. D by dx of x plus 3 अब अंदर ही रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. D by dx of कैसा भी constant ही है 3. Now this is equal to, for x cube we apply this formula, this one, but still I want to write here detail. Look at this x power n formula we have to apply. That formula is this one, d by dx of x to the power of n का कितना भी power n, we apply this formula, nx power n minus 1. Better I will write it here only, not here. Here only, d by dx of x power n formula we have to apply. That is nx power n minus 1. अब now इसको और इसको दोनों को नोटिस करिए. What is n value? Tell me. If you compare, what is n value? 3. 3. Very good. 3. So x is x only, n value is 3. So we apply here the formula. ये 3 ये जो पहले वाला है पॉजिटिव का, एक ब्रैकेट ओपन करेंगे. Here comparing n value is 3. So 3x power 3 minus 1. Correct? ये ब्रैकेट क्लोज. प्लस 5. फिर से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. अब n वैल्यू है 2, तो क्या होता? 2x पावर 2 minus 1. राइट ना? 2x पावर 2 minus 1 Yes. क्लोज. प्लस 6 इंटू डी बाई डी इसका इसका तो डायरेक्ट फार्मूला 1 है. प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट बोल तो 3 कांस्टेंट है 0. अब ये देखिए 3 3 का 9, x 3 minus 1 is 2 प्लस 5 इंटू x पावर 2 minus 1 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है. प्लस 6 1 जा 6 और ये हो गया आपका डायरेक्ट डी वाई बाई डी की वैल्यू. समझ में आ रहा है? ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी कर रहे हैं. Yes. अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस में भी Yes. जाए. स्लोली स्लोली वी कैन मूव ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस. थोड़ा Okay. सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे. नंबर 3, सेम फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस 3 sin x प्लस 2 रूट x प्लस नॉट प्लस 3 माइनस 1. अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, then how to solve it? You see solution. What is the first step? Let one start. थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अपन अब. y is equal to log x प्लस 3 sin x 3 sin x प्लस 2 रूट x माइनस 1. क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलिए? कमन डिफरेंशिएट. कमन बोलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, कमन विथ रेस्पेक्ट X. टू, दिस इज dy dx of
y is equal to सबको डी बाई डी अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log plus 3 is a constant डी बाई डी एक्स ऑफ sin x okay plus 2 is a constant again डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ये 1 है 1 को आप कांस्टेंट कंसीडर करके डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हो डी वाई बाई डी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x यू हैव टू मेमोराइज द फार्मूला देख सकते हैं आप डेरिवेटिव ऑफ log x 7 बाई तो आंसर इज 1 बाई दिस इज 1 बाई फार्मूला मेमोराइज करें तो मालूम प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन का कॉस होता साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स मीन्स 1/2 रूट एक्स and this derivative of constant is 0 so minus 0 also no need to write this 2 and this 2 must be cancelled our answer will be 1 by x plus 3 cos x plus 1 by root x that's the answer of this problem so this is the way you have to find out the solution of this type of question right अब Yes. देखिए एक क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल का एक क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन so let us assume that y is equal to suppose you have two terms sin x into cos x you have to find out the derivative of this one सोल्यूशन में देख सकते हैं आप स्टेप नंबर 1 में लिखना है आपको गिवन y is equals to sin x into cos taken our equation number 1 now we have to differentiate equation number 1 differentiate equation number 1 with respect to here the variable is x so always x so when applying d by dx of y is equal to d by dx of actually there are two terms now we write like that one term is here sin x into one term is here cos x so when we have two terms in a multiplication form it means we have to assume first term as u second term as v and we apply the formula for your convenience I am writing the formula again uv is equal to but tomorrow I want all the formulas and tomorrow you are going to hostel again Yes. so the class will be as usual 9 o'clock night 3 by dx of v Okay. then continuing first you can see ये फॉर्म है u into v first u as it is means sin x as it is 3 by dx of what you will write here cos x plus cos x as it is then d by dx of sin x now write down their answers and finish the problem sin x is as it is derivative of cos x is minus sin x memorize the formula so that you can understand plus cos x as it is derivative of sin x is again cos x this is minus sin into sin square x and cos into cos square x and don't go for the next step because you don't know the basic rules of this so we'll stop it here on this is about product rule this question is based on the product rule एक क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन रूल पे सपोज फॉर एग्जांपल यू हैव लाइक दिस sin x sin
by, for example, you have root x. We have to differentiate this function. This function we have to differentiate. So by selecting a solution, now solution, your first step will be given y is equal to sin x. Numerator sin x का function है. Denominator may be x है. This is equation number one. So differentiate equation number one with respect to x. So then applying the rule, we have d by dx of y is equal to d by dx of न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी फंक्शन है. न्यूमरेटर में एक sin x का फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर में भी रूट x फंक्शन है. तो हियर दिस आवर क्वेश्चन इज ऑफ दिस फॉर्म. ये ऐसा बन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला फॉर्म है u by v फॉर्म है. This is taken as u and this term is taken as v. So u by v form. So according to the formula, we should write like that. V square here first, then v d by dx of u minus u d by dx of v. Then if you substitute in the formula and proceed, what happens here you can see. First of all, according to the formula, you have to square the denominator. Let us square it. Root of x whole square. And here according to the formula v means root x will come here. And then we write the formula d by dx of sin x minus u as it is. Means sin x as it is. Then d by dx of root x. If you know the formula, easily you can answer this question. Root and square will be cancelled. Root x here as it is. Numerator. D by dx of sin x is equal to cos x. You can go through this recording once again so that you can understand the formula and as well as the class. Root x differentiation is Yes. 1 by 2 root x and divided by x is the value of dy by dx. So like that you can find out the derivative of the function in product rule, in quotient rule. और एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें यू वी डब्ल्यू भी आ रहा है. One question is find the derivative of x sin x e power x. कितने टर्म्स है टोटल? कितने टर्म्स है टोटल? कितने टर्म्स है? y is equal to how many terms are there? x into sin x into e power x. How many terms are there? कितने Three. टर्म्स है? 3 टर्म्स है. इतना टाइम? So differentiate equation number 1. We call this is 1. Differentiate equation number 1 with respect to x. So then it is d by dx of y is equal to u v w का फॉर्मूला अप्लाई करना मतलब दो टर्म्स को बाहर रखना. x into sin x outside. We find out the derivative of e power x plus two of them we can keep it outside. Sin x into e power x outside in this case
then d by dx of e power x plus, which will not change sin x. Okay. X e power x outside, then dy dx of sin. ये प्रॉब्लम, ये टॉपिक कब इजी दिखेंगे आपको? जब आपको फॉर्मूला पता है। एक्स से साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, कर ई पावर एक्स से क्या प्लस साइन एक्स ई पावर एक्स, दिस इज वन प्लस एक्स ई पावर एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, दैट्स इट, दैट्स इट इन दिस प्रॉब्लम. So the formulas are most important. If you are perfect in the formula, any type of questions, sometimes we have some inner function problem also in this. Question rule, logarithmic function, how to differentiate logarithmic function, how to differentiate trigonometric functions, hyperbolic functions, all this comes under this derivative concept. Derivative and its mathematical brother, that is integration, both is related to each other. Okay. एक और क्वेश्चन देख लो, इसमें स्टेप आप बोलेंगे, कोई भी आप तीन फंक्शन का नाम दीजिए, कोई वाई इज इक्वल टू कुछ तो भी तीन फंक्शन बोलिए. आप बोले तो ही मैं स्टार्ट करूँ. सर कुछ भी दे दो। आप बोलो, मैं आपको बोले तो मालूम. देखिए एक्स स्क्वायर एक ले लीजिए. ठीक है, एक्स स्क्वायर एक ले लीजिए इंटू लॉग एक्स एक ले लीजिए. राइट, दोनों का ही करके देखिए एक बार. चलिए सर, तो डिफरेंशिएट में ये राइट है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. अब रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं क्लास की? जी सुन रहा हूँ। हाँ, क्लासेस में आपको इंटरेस्ट आना बोले, फॉर्मूला परफेक्ट आना. डी बाई डी एक्स ऑफ, देर आर एक्चुअली टू टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग, तो यूवी फॉर्मूला, दिस इज एज यू, दिस इज एज, so then फार्मूले की जरूरत भी नहीं है. देखिए पहले टर्म को एज इट इज रखना है, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करना. डिफरेंशिएट करना मतलब डी बाई डी एक्स लगाना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकंड टर्म को अब एज इट इज रखना है, फर्स्ट टाइम को डिफरेंशिएट करना. डी बाई डिफरेंशिएट करने का मतलब डी बाई डी एक्स लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूला में देख सकते हैं आप, इट्स वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का फार्मूला अपन इससे पहले भी करे हुए, एन एक्स और एन माइनस वन के फार्मूले से करना. इस वन स्क्वायर टर्म, वन एक्स कैंसिल, एक्स प्लस log x into 2x. Don't multiply these two terms. ये logarithmic फंक्शन है, ये algebraic फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं. डोंट मल्टीप्लाई हियर, 2 log x into x स्क्वायर नहीं. जब वो स्टेप करे तो फिर मार्क्स कुछ भी नहीं आता. दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. तो मतलब क्या है, डेरिवेटिव में टोटली तीन अलग अलग तरह के रूल्स है. अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है तो यू बी रूल, अगर दो टर्म्स एक्स फंक्शन के हैं डिवाइड में है तो यू बाई वी रूल, तीन फंक्शंस है तीनों भी एक्स के टर्म्स में है तो यू वी डब्ल्यू. ये पूरे रूल्स फॉलो करके फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लीजिए. क्लास में समझ में आना बोले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तो फार्मूला. अगर आप फॉर्मूले में परफेक्ट हैं तो फिर मेरी भी जरूरत नहीं है, आप सही क्वेश्चन बना के वो सही आंसर दीजिए. ठीक है, फिर अपन दो तीन क्लासेस कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन के लिए. मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सेलेक्ट करके रखता हूँ आपके लिए. आप फार्मूला परफेक्ट रहे तो ही आपको क्लास समझ में आती है. बार बार बोल रहा हूँ ये बात, जब तक आपको फॉर्मूला परफेक्ट नहीं है, आप एक काम करिए, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज लिख लीजिए रफ कॉलम में, कहीं तो भी पेपर में लिख के इसके आंसर्स को मेमोराइज करिए. एक हिंट दे रहा हूँ, देखिए वो हिंट याद रखिए. ये हिंट क्या है बोलता हूँ, जब भी आप डेरिवेटिव ऑफ कोई भी टर्म जो सी से स्टार्ट हो रहा, उसका आंसर माइनस रहता है. ये रूल इसके अंदर अप्लाई नहीं होता, ये फार्मूला नहीं होता, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये फार्मूला नहीं होता.
ये फार्मूलाज के लिए बता रहा हूँ। देखो सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो ओके। इन्हें भी सी से स्टार्ट हो रहा ना, तो आंसर क्या दे रहा, माइनस पे आंसर है। कोई भी टर्म अगर सी से स्टार्ट हुआ, कोई भी टर्म अगर सी से स्टार्ट हुआ, तो डेरिवेटिव के टर्म्स में उसका आंसर माइनस होगा। ठीक है ना, ये याद करने के लिए यस। आसानी हो जाती है। राइट, इस सिर्फ ओके। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिया। आप देख सकते हो ये फार्मूलाज में, ये हाइपरबोलिक फंक्शन में भी रूल अप्लाई नहीं। ठीक है, राइट, विल एंड अप दिस सेशन। फॉर्मूलाज रेडी रहिए, कल 9 o'clock से कंटिन्यू करेंगे अपने डेरिवेटिव क्लास। ओके।